cases, we have often seen that poetry does not really use dialogues, whereas its drama, which you will be reading in your third semester, they employ dialogues. But in some poems, there are dialogues. In fact, you'll be reading something about something called dramatic monologue. Since you know a little bit about Robert Browning, if you have written about Robert Browning in the question number 2, Robert Browning, Elizabeth Barrett Browning, there was a question this year. If you have written about that, then you know what dramatic monologue is, or you might have written about dramatic monologue. Okay, so in dramatic monologue is actually a monologue, like spoken by a single person. But yes, Kaustav is right that in prose we often find dialogues. Not in an essay usually, but in a short story, in novel, we have lots of dialogues. But drama is something that specializes or is communicated entirely through dialogues. But in prose, there is a narrative, as Neha or Priya said, that plot is a sequence of events in a narrative. So a poem can also be a narrative. Okay. So we got a few differences between poetry and prose. Another basic difference between poetry and prose is, and you will be like, अरे ये तो आंखों के सामने था. Prose सर is yes. सर सर प्रोज को हम लोग मतलब ऐसे किसी को सुना सकते हैं, बोल सकते हैं, पैराग्राफ की तरह, मतलब कहानी की तरह सुना सकते हैं, और पोइट्री को हम लोग गा भी सकते हैं. ये डिफरेंस. Yes, that is also a very good difference that you're talking about. There are some poems which can be sung. True. But most of the prose cannot be sung. कुछ कुछ लाइनें प्रोज की भी ऐसी होती हैं जो पोइटिकल होती हैं, लिरिकल होती हैं. बट वी usually we cannot sing a prose. Very good, very correct. And that is mainly because, as Kaustav pointed out earlier, that prose cannot be rhyming. You cannot have rhyming lines in prose, but in poetry you can have. So it always helps if you have rhyming lines. It helps with the singing part. Yes, any other differences? You are very good, you are doing very good. This is what a real class should be. You should be talking more and I should be. Yes, Neha. Sir, Hmm. sir, in the prose, the writer has no word limit in it, but in poetry, there has word limit. No, not necessarily. There is no rule which says that there should be a word limit in poetry and there should not be a word limit in prose. You can write a very very long poem like epic, Paradise Lost, Mahabharat, Ramayana. These are epics and they are uh, thousands, lakhs of words. Whereas a short story might end in 6 words also. Do you know about a short story that ends in just 6 words? सर Anyone? अभी तो याद नहीं आ रहा है. हाँ हाँ. अभी तो याद नहीं आ रहा है. Okay. This short story was written in just 6 words by Herbert Ernest Bates, H.E. Bates. The story is like this. Uh, for sale, new shoes never worn. For sale, new shoes never worn. Can you tell the meaning of this line? It's like an advertisement, sir. Like an advertisement? Like Yes, what is the meaning of this? like means the means who the speaker or the narrator is implying that there are there is a pair of shoes which are for sale and they have never been worn till now. But New shoes. yes, I mean, when you are displaying new shoes on a in a shop, of course those shoes are not supposed to be worn by anyone. Then why tell that never worn? I mean,
যদি তুমি দোকানে যাও, দোকানে গিয়ে কি দোকানে যে সেলসম্যান থাকে ওরা এটা বলে যে এই দেখুন নতুন জুতো, এটাকে কেউ কোনোদিনও পড়েনি, এরকম কোনোদিনও শুনেছো কারোর কাছে? না স্যার। তাহলে এই নেভার ওয়ার্নের মানেটা কি আসছে? ব্যাপারটা হচ্ছে যে একটা মানে বা বেবি শুজ ফর সেল, এরকমও হতে পারে ব্যাপারটা। আই লেট মি চেক হোয়াট দ্য এক্স্যাক্ট স্টোরি ইজ। Yes sir, it's for sale baby shoes never worn. I just Yes, checked. for sale baby shoes never worn. Now what is the meaning of this poem, this short story? Sir, I don't know if it's right, but probably it's like it's saying that these shoes were meant for a baby, but that baby never got the chance to wear them. Why? Probably it's dead. The baby is dead or something. Yes, very good. So the baby who was supposed to be born either was born dead or died and never could wear the new shoes that were bought for the baby. But there is something more disturbing here. Can anybody point that out other than Kostab? इसमें और भी कोई गहन दुख छिपा हुआ है, कुछ और ज़्यादा तकलीफ दे है इसमें। मतलब किसी बच्चे का मर जाना बहुत तकलीफ दे होता है, लेकिन उससे भी ज़्यादा तकलीफ दे यहाँ पे और कुछ है। सर मतलब उसके लिए जो खरीदे उसके मतलब कोई भी पेरेंट्स या कोई भी खरीदे, बस उसको पहना नहीं पाए, ये भी ऐसा कुछ? मतलब हाँ कोई चीज उसके लिए खरीदा गया बट उसके पहनाने से पहले वो मतलब नहीं रहा, ऐसा कुछ? हाँ, वो तो है। मतलब बच्चे का जो शू था वो उसको मतलब बच्चा पहन नहीं पाया। लेकिन इसमें और भी एक बहुत ही मतलब दर्दनाक है एक चीज। व्हाट इज दैट? इट्स वेरी देयर। अच्छा कोस्ता भी बोलो। इट्स राइट स्टेयरिंग एट यू। भागছি। हम्म। हालत इतना खराब है, द सिचुएशन इज सो बैड दैट दो शूज हाँ। हैड टू बी सोल्ड। बच्चे के जूते कौन बेचता है? Just imagine the poor situation that the parents are so poor that they are selling the unworn shoes of the baby. The problem, the sadness is not that the baby is dead. The sadness is that these parents are compelled to sell their baby shoes. Can you imagine that? हम हमारा जो प्यारा होता है अगर वो चल बसता है या यूजुअली हमारे ग्रैंड पेरेंट्स या ऐसे, तो अगर वो हमें कोई चीज़ देते हैं या फिर हम उनके लिए कोई चीज़ खरीदते हैं, कोई गिफ्ट होता है, कितनी भी गरीबी आ जाए वी डोंट वांट टू सेल इट, राइट? तो सोचो उस उन माँ बाप पे क्या गुजर रहा है जो अपने बच्चे के लिए खरीदे जूते को भी उसको सेल करना पड़ा। एंड ऑल ऑफ दिस ओनली इन 6 वर्ड्स बाई H.E. Bates. यू विल डू गुड टू रिमेंबर दिस। तो वर्ड लिमिट का कोई बात ही नहीं है नेहा। 6 वर्ड्स में इतना दर्दनाक कहानी कोई कह सकता है, और कोई 6 लाख वर्ड में 10 नॉवल लिख सकता है, और 60 लाख वर्ड्स में एक एपिक हो सकता है। सो वर्ड लिमिट इज नॉट द थिंग।
since you have all contributed, I will contribute one point, and this should be also written down, noted down, that prose is basically horizontal. प्रोज इज बेसिकली हॉराइजॉन्टल, पूरा पेज या मार्जिन तक लिखा जाता है. पोइट्री इज वर्टिकल. ये तो तुम लोगों के सामने ही है ना, बट यू नेवर थॉट अबाउट इट कि अरे ये भी तो डिफरेंस है. डिड यू गेट माई पॉइंट और आर यू कंफ्यूज्ड? Yes, sir, yes. ओके. Basically, the हाँ, poem is centrally aligned, and the prose is covering the whole page. yes, usually usually the prose is from margin to margin. It might be centrally aligned. When you are typing, you can be like left aligned, center aligned, right aligned, justified. It can be anything, but it's usually from margin to margin. But poetry, the length of a line of a poetry is determined by prosodic choices. Now, what is, can anybody tell me what is prosody? प्रोसोडी वर्ड सुना होगा. So prosody means in Bangla छंदो. छंद हिंदी में कहते हैं छंद, जिसको राइम के बारे में, रिदम के बारे में जो बोल रहे थे. तो पोएट्री का जो लाइन डिटर्मिनेशन होता है, लंबा कितना होगा, कहाँ से कहाँ तक लिखा हुआ होगा, उसका एक लिमिट है. इफ नॉट वर्ड लिमिट्स, बट देयर आर सम प्रोसोडिक लिमिट्स टू मोस्ट ऑफ ट्रेडिशनल पोएट्री. पोस्ट मॉडर्न पोएट्री अलग चीज़ है, उसका कोई लिमिटेशन नहीं है, उसका कोई ठीक ठिकाना नहीं है. You should remember it, note it down, write it down sometime somewhere, that uh, any line of poem in English literature cannot have more than 14 syllables in a line. I mean, traditional poetry, even most of the modern poetry also, you cannot have more than 14 syllables in a line, in a single line of poem. Now, what is a syllable? Syllable is the single sound which contains a vowel sound. Like, if you know we know the word father. So there are two syllables in father, fa, the. Okay, so in that way, if you see all the poems that you have read, none of the lines will have more than 14 syllables. That means none of the lines that you have read, including sun rising, if you count the syllables in a single line, they will be lesser than 14, maximum 14. So that determines the length of a line in a poem. Whereas in prose, no such consideration is required. It can be of any length. It can be a short sentence, it can be a long sentence. As Kaustov was saying, that in poem we have sentences and paragraphs. In poetry we have stanzas and quatrains and etc. and these kinds of things. Okay. So these are some of the basic differences between poetry and prose. Priya, can you summarize all the differences? I hope you have written them down. Can you tell them to the rest of us?
सर हम्म हम सारा नोट डाउन नहीं किया बट कुछ कुछ ही किए हैं. अच्छा, तो कुछ कुछ बताओ. वही in prose we have paragraphs and in poetry we have stanza. और क्या क्या था? पोइट्री को हम्म पोइट्री को सर हम याद करके बोल रहे हैं सर 2 मिनट. याद करके क्या? मैंने तो लिखने बोला है ना. सर हम लिख ही रहे थे अभी वही लिख ही रहे हैं. जैसे जैसे बोलूं वैसे वैसे लिखना. ओके नेहा, तुमने लिखा है? यस सर, थोड़ा लिखा है. ओके, थोड़ा बताओ. सारा नहीं. कुछ कुछ थोड़ा. सर, हाँ. sir, in prose does not pay attention to rhyme and rhythm, हम्म or poetry pays attention to rhyme and rhythm. हम्म और प्रोज एक बार भी मतलब पढ़ लेने से मतलब समझ आ जाता है. एक बार में पढ़ने मतलब से इजीली. समझ में आ जाता है हर प्रोज? ऐसा तो नहीं है. मतलब कुछ कुछ प्रोज में ऐसा पढ़ लेने से थोड़ा मतलब समझ आ जाता है, बट पोइट्री में एक बार से ज्यादा बार पढ़ना पड़ता है. ओके कभी कभी. ओके ओके. और और प्रोज में सेंटेंस और ग्रुप ऑफ पैराग्राफ्स होते हैं. हम्म और पोइट्री में स्टैंजा रहता है, ग्रुप का लाइंस. हम्म ओके. और प्रोज में सर लैंग्वेज बहुत नेचुरल रहता है, नेचुरल और ग्रामेटिकल ऐसा रहता है प्रोज में. हाँ, दैट्स अ वेरी गुड पॉइंट. प्रोज. और हाँ पोइट हाँ, बोलो. और पोइट्री में रिदम रहता है उसमें, पोइट्री में. हाँ, yes sir. ओके. सो पोइट्री वर्टिकली लिखा जाता है, प्रोज Yes हॉराइजॉन्टली sir. लिखा जाता है. ये भी है. ठीक है. सो these are Yes the sir. things that we need to know about the difference between poetry and prose. Okay, if we find out more differences we will talk about it, we will write it. Now let us try to understand the difference between poetry and poem. I think we discussed about this in our first sem also, didn't we? कि पोइट्री और पोएम में क्या फ़र्क है, क्या क्या दोनों एक ही हैं, और इज़ देयर एनी डिफरेंस बिटवीन these two things? Though we are not going to deal with poetry or poem, but since we are talking about some basic things, um, let us as well talk about poetry and poem. Anyone who wants to say something about the difference between poetry and poem? Kundan, any ideas? Sir, can I? Yes, sure. Sir, poems like the text we read in our first semester, those can be called as poems. Okay. But the art form or the style of writing poems is called poetry. So, you read some poems in your syllabus, but did you read poetry also? When we read a poem, are we reading poetry also?
Yes, no, maybe, whatever. Neha? I think yes, sir. Okay, Kostov says that when we are reading a poem, we are also reading poetry. Neha, what do you think? Sir, yes, sir. We read poetry also. Sir. Okay. And Kostov said that poetry refers to the style of writing a poem. So, when you are reading, when you have read Shakespeare's sonnet. Not Yes. exactly style means it was a wrong choice of word, but like I meant like the entire art form of writing a poem is called poetry. Like for example, if I say like suppose I am saying that I read three poems and I like reading French poetry. In that sense, I am saying like the art form is I am referring to. Yes, you are very correct. When you are saying that the entire way in which a particular poet writes is usually understood to be the poetry of that poet. Shakespearean poetry, Elizabethan poetry, neoclassical poetry. That means an entire work. एक आदमी ने जितना पोएम, आदमी या औरत, पोएट पोएटेस, जितना जिसने भी जितना भी लिखा है, पूरा का पूरा उसका जितने भी पोएम्स हैं वो हो जाता है पोएट्री. सो द पोएम इज अ स्मॉलर कंसेप्ट in comparison to poetry. Imagine poetry to be a bigger circle, and within that circle there will be a smaller circle called poem. Poems are individual. Again, and I hope you're writing these things down, poem is concrete. It's material. It's on the page. Poetry is abstract. Poetry हम देख नहीं पाएंगे. जैसे, let me try to give you an example. तुम लोगों के क्लास में मैंने कभी गुस्सा किया तुम लोगों के ऊपर? Was I ever mad at you? I don't remember. No, sir. Like you are No, not, sir. like you are not attending classes or something like that. Girls, was I ever angry at you? Like, did I say anything like in anger? No, sir. No? Okay, that's strange. Usually people know me for being very angry, and I say very angry things to students who are not regular or something like that. But सर maybe. सर 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 हाँ. आपने हम लोगों पे नहीं किया, लेकिन वो नीलंजना उस पे किया है, मतलब 2-3 लड़के लोग पे किया है. हाँ, तो कैसे? हाँ, मैं वही सोच रहा हूँ कि बिना झाड़ दिए या बिना झाड़ खाए कैसे पूरा का पूरा सेमेस्टर चला गया. सो you saw that I was angry, right? But did you see my anger? तुम लोगों को समझ में आया मैं गुस्से में हूँ, लेकिन मेरा गुस्सा तुम लोगों को नहीं दिखा. तुम लोगों को क्या दिखा? मैंने आंखें बड़ी बड़ी कर ली, या मेरा आवाज़ बहुत तेज़ हो गया, आवाज़ ऊंचा करके मैं बोलने लगा, हाथ पैर ऐसे ऐसे करने लगा जैसे गुस्से में लोग यूजुअली करते हैं. टेबल अगर बजा दिया मैंने, वैसा उंगली ऐसे उठाकर बात किया. तो you cannot see the anger, but you can see the symptoms of anger. You can see an angry person. Okay, so गुस्से में हम ऐसे दांत ऐसे पीसते हैं, ऐसे फ्राउन करते हैं. Similarly, poetry is not visible to us, but the poem is. But the poetry is within the poem. वो एक आत्मा जैसा है और पोएम एक बॉडी जैसा है. So that is the basic difference between poem and poetry. सर एक बार फिर से रिपीट कीजिए ना. Okay. जैसे how do I put it? Say suppose Kundan has a girlfriend. Kundan, तुम्हारा गर्लफ्रेंड है?
नो सर, अरे यार, चाहिए चाहिए भी नहीं ये तो क्यों, तुम ब्रह्मचारी हो क्या? नो सर, देन क्यों नहीं चाहिए? ऐसे ही। ऐसे ही नहीं चाहिए, ओके। सो सपोज कुंदन हैज़ अ गर्लफ्रेंड। कुंदन अपने गर्लफ्रेंड से बहुत प्यार करता है। तो अगर कुंदन को अपने गर्लफ्रेंड से प्यार है तो उसको कैसे बताना है? हाउ हाउ इज ही गोइंग टू एक्सप्रेस हिज लव? फॉर एग्जाम्पल वो फूल देगा, गुलाब का फूल देगा, चॉकलेट देगा, केयर करेगा, ऐसे बोलेगा बाबू ने थाना थाया, यू नो, दीज काइंड्स ऑफ थिंग्स। तो प्यार जो है वो दिखता तो नहीं है। अगर दिखता तब प्रॉब्लम हो जाता, क्योंकि बहुत सारे इंसान अलग अलग लोगों से प्यार करते हैं। अगर दिखने लगता तो बहुत प्रॉब्लम होता, या फिर कोई प्रॉब्लम ही नहीं होता। तो प्यार जताने का जो तरीका होता है, जैसे कभी कभी हमारे पेरेंट्स जताते हैं, कभी गुस्सा से प्यार जताते हैं। जैसे वो मीम आता है ना फेसबुक में या फिर दूसरे सोशल साइट्स में, कभी कभी आता है कि क्लास 8 की एक लड़की और ऑनर्स पढ़ रहा है, ग्रेजुएशन कर रहा है एक लड़का, उनमें एक रिलेशनशिप है। तो क्लास 8 की जो लड़की है वो अपने बॉयफ्रेंड को डांट रही है। सो ये डांटना इज नॉट लाइक दे आर नॉट, दे डोंट हेट ईच अदर, बट द गर्ल इज ट्राइंग टू टीच सम मैनर्स टू द बॉय. So poem is this dantna, this chocolate, this rose, this babu ne thana thaya, long calls, constant messages, quick replies. That is, these are the symptoms of love. And problematically, all of these symptoms can be very easily duplicated. तो बहुत बार हमें कन्फ्यूजन हो जाता है कि मतलब क्या है ये, प्यार है कि क्या हो रहा है, फ्लर्ट करने में और प्यार करने में। एनीवे, सो पोएम इज़ लाइक अ रोज़ दैट यू कैन सी, यू कैन टच, यू कैन रीड। चॉकलेट खा सकते हो, देख सकते हो। बट पोइट्री इज़ लाइक द वर्ड लव, abstract noun which cannot be seen, but it is there like a soul in a body. अब समझ में आया प्रिया? यस सर। हाँ, तो जब तुम बच्चों को पढ़ाओगे, क्योंकि अभी तुम लोग ग्रेजुएशन में आ गए हो, तो तुम लोगों को चाहिए कि तुम लोग अपना कुछ पॉकेट मनी वगैरह इनकम करो। आई डोंट नो अबाउट यू गाइज, जब हम बड़े हो रहे थे, लाइक वी वर इन ग्रेजुएशन एंड ऑल, वी नेवर गॉट एनी थिंग कॉल्ड पॉकेट मनी, एंड वी वर लाइक doing some tuitions or something to earn some money to do whatever we wanted to do. But things were very different back then. Abhi to you are like single, everyone, most of you are single children of your parents, and your parents might be giving you money anyway. सो अगर पढ़ाते हो तो अच्छी बात है, अपना ग्रामर ठीक होगा, वोकेबुलरी ठीक होगी, क्योंकि जो मेन प्रॉब्लम हो रहा है तुम लोगों के साथ वो ये है कि योर ग्रामर, योर वोकेबुलरी इज़ नॉट करेक्ट इन मोस्ट केसेस। वो लिटरेचर का सेंस तो बाद में आएगा, पहले तो ग्रामर और वोकेबुलरी करेक्ट करनी है। और पढ़ाने से खुद भी हम पढ़ते हैं तो हमारा जो लिटरेचर है या ग्रामर है वो ठीक हो जाता है। एनीवे, सर यूट्यूब पे वोकेबुलरी का क्लास करने से भी तो मतलब सही रहता है, उसमें टेस्ट वगैरह रहता है। हाँ, तो तुम करती हो क्या? हाँ सर। ओके, वेरी गुड। तो इनको भी बता देना कि कौन सा क्लास है, इनको वो भी कर लेंगे। तो ओके सर। सो so as I was saying, that difference between poem and poetry is that poetry is something that you cannot see. It is there, it's there in the style. Kostav was right also when he said that it's a style of writing poems. That is also poetry. Poetry means all the poems of a particular writer. And then we can say the poetry of Shakespeare, the poetry of uh, John Donne, metaphysical poetry. Metaphysical poetry means all the poems written by metaphysical poets. Or at the same time, it might also mean that
all poems written in the metaphysical style, whether by metaphysical poets or not. तो ये है पोइट्री, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, क्योंकि ये बेसिक चीज़ें हमें समझना है. I'll try to provide you with the previous year's questions that will give you an idea about what we are dealing with, how we are going to do it. Also remind me to send you some already prepared notes. I don't know if I've already provided them to you. Read only the prose part from those notes that I think I have provided earlier. If not, let me know. I will be providing you some notes as well. Okay, any questions, doubts, anything that you would like to share? Yes sir, I want to ask you prosody. Sir, prosody means sir, वो थोड़ा समझ नहीं पाया था सर. प्रोसोडी का मतलब होता है कि किसी पोएम को हम कैसे गाएं. जैसे शायद नेहा या प्रिया ने कहा कि पोएम को हम गा सकते हैं, तो प्रोसोडी वो सिस्टम है जिससे हम किसी पोएम को कैसे गाएं वो पता चलता है. प्रोसोडी कंसिस्ट्स ऑफ syllable division, feet marking, मीटर एनालिसिस, कि एक लाइन में कितने सिलेबल हैं, वो उसमें कितने फुट हैं, फीट हैं, और उसका मीटर क्या है. ऐसे चीज़ों को हम प्रोसोडी में रखते हैं. इट्स अ ब्रांच ऑफ स्टडी लाइक रेटोरिक सुना होगा, फिगर्स ऑफ स्पीच सुना होगा, क्योंकि क्लास में भी मैं बहुत बार बोलता हूँ इनके बारे में. सो इट्स अ लिटरेरी डिवाइस, यू कैन से. एक ऐसा डिवाइस जिससे हम पोइट्री में जो राइमिंग है या रिदम है उसको एनालिसिस करते हैं, उसको प्रोसोडी कहते हैं. यू कैन फाइंड आउट मोर फ्रॉम गूगल और अ डिक्शनरी. ओके, एनीथिंग एल्स? ओके सर, थैंक यू सर. স্যার আমার একটা কোশ্চেন আছে, কিন্তু মানে এটা আজকে ক্লাসে নিয়ে নয়. কোশ্চেনটা হচ্ছে যে লাইক আমাদের সেকেন্ড সেমিস্টার